Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Jana Vallabha. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha. Hare Krishna. So very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So, in this sixth chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam, we are discussing about the cosmic manifestation. We discussed that all the activities of the universe was suspended. Nothing was moving because this material energy cannot move without the intervention of Krishna. And things were in suspended mode. And all the living entities, all the ingredients were created, but they also could not do anything. Then the Lord entered into this material energy with his destructive potency. And then the Lord, we discussed in the previous session, that the Lord pushed this material energy. He entered into all the material elements. And he entered into this material energy as Paramatma, super soul. And as soon as the Lord entered into this material energy, everything started moving. All the living entities, they got enlivened. Now today we'll start with text 4, Shloka number 4 of the 6th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam. Prabuddha karma daivena trayom vimshatiko ganaha prerito janayat swabhir matrabhir adhipurusham. Prabuddha karma daivena trayo vimshatiko ganaha prerito janayas swabhir matrabhir adhipurusham. Translation: when the 23 principal elements were set in action by the will of the Supreme, the gigantic universal form or the Vishvarupa body of the Lord came into existence. So, now here in this shloka we see that Prabuddha karma daivena. Prabuddha karma. Prabuddha karma means the activities. Prabuddha means the activities started in the universe. Daivena means by the will of Krishna. Daiva means Lord Krishna, Lord Vishnu. Trayo Vamshatikaha. Trayo Vamsh means 23. Vimshati means 20. 3 means, Trayo means 3. So 23 elements, they all started moving. They all were set into motion by Ganaha Prerito. By the combination of Janayat Swabhir. So as soon as the Lord entered into this material creation as Paramatma, as the super soul, as the supreme Lord of this creation, this material universe or this creation, all the material ingredients, they started moving. Ajanayat Swabhir Matrabhir Adhipurusham. This whole material energy was manifested and then it started moving by Swabhir, by the personal touch of the Supreme Lord.
Swabhir means by his personal touch. And this is how all the material ingredients combined together when they start moving in the universe, they form the Virat Rupa or the universal form of the Lord. Generally, those who are non-devotees, those who don't believe in the personal form of Krishna, they are very much attracted by Vishwarupa of the Lord. They are very much interested to know about the Virat Rupa of the Lord or Vishwarupa of the Lord. Whereas devotees of Krishna or devotees of the Lord, they are not much interested in Vishwarupa of the Lord, because they are in love with personal form of Krishna. This Vishwarupa or Virat Rupa of the Lord is a material manifestation, temporary material manifestation, and sometimes this Virat Rupa of the Lord is also conceived by the sages. It is being told by the sages, imaginary, so that these impersonalists and those who are non-devotees, they can also, because they all have this tendency to worship something huge, something big like mountains, rivers, seas, oceans, because they are not able to conceive the personal form of Krishna. For them, it's a fantasy. Non-devotees, atheistic people. So they are, or impersonalists, those who do not believe in personal form of Krishna, because they have never seen Krishna, and because they are also non-devotees. So these people, they are very much attracted to Vishwarupa of the Lord. They like hearing about Vishwarupa. But devotees of Krishna, they are not interested in Vishwarupa. They hear about Vishwarupa in the Bhagavad Gita. Lord Krishna in the 11th chapter, he reveals his Vishwarupa also to Arjun, his Virat Rupa, his universal form. But Arjun was not very interested. If you see the 11th chapter, Arjun requested Krishna to show him his Vishwarupa. And then Arjun, when he saw the Vishwarupa, he became terrified and he did not want to see Vishwarupa. He told Krishna that, Krishna, I don't want to see your universal form. I really want to see your original form. Beautiful. Venum Kvadantam Aravinda Dalaya Taksham Barahavatam Samasitambudha Sundarangam Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajam. That beautiful form of Krishna, in which Venum Kvadantam, he holds his flute in his hand, in his two lotus hands, and he plays his flute with his lotus lips. Arvinda Talaya Taksham, and his eyes are like lotus petals. His eyes are actually like lotus petals. Have you seen lotus petals? How they are so beautiful. Krishna's eyes are exactly like that. Exactly, they resemble lotus petals. So Venum Kvadantam Aravinda Dalaya Taksham Barahavatam Sam Asitam Ambud Sundara. And he wears peacock feather on his forehead. He wears peacock feather on his forehead. Ambud Sundarangam. Ambuda. Ambuda means blue clouds, sky, the color of sky.
You might have seen the color of sky. It is blue in color, isn't it? The color of sky is blue in color. So Krishna's body is exactly like blue sky, bluish tinge on his body. So Barahavatam Sam Asit Ambud Sundarangam, and his most beautiful personality, unlimitedly, infinitely beautiful. Kandarpa Koti. And what is the comparison of beauty of Krishna? Although there is no comparison, no one can be, it's impossible to compare Krishna's beauty with anything in this whole creation. But still, Lord Brahma, he is trying to compare. So he says, Kandarpa Koti Kamaniya. Normally, every human being is attracted by Cupid. Cupid means the god of sex, the god of male-female attraction. So in this material world, this male-female attraction is considered to be the highest pleasure. All the living entities, including animals, birds, beasts, reptiles, human beings, they are all enamored by the opposite gender. Women are enamored by men and men are enamored by women. Same in animals also. So it is considered to be great pleasure in this material world, this male-female attraction. And that attraction between male and female is because of Cupid, the god of lusty desires, or Kamdev, or who induces attraction between male and female. He is the controller. He is the Devata who controls, who is the demigod who controls this. So, Kandarp or Kamdev, or the god of Cupid, the god of lusty desires, he is very attractive in this material world. You see, whole material world is attracted by him, isn't it? Everyone wants to enjoy the opposite gender's body. So it is said, Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobha. Krishna's body, Koti. Koti means millions and billions and trillions. Billions and trillions of cupids also cannot match the beauty of Krishna. Kamaniya. Krishna is much more beautiful than even millions and trillions of cupids combined together. The ordinary human being is attracted by even a small attraction of Cupid or Kamdev or god of lust. But Krishna's beauty is such that even billions and trillions of cupids cannot match Krishna's beauty. Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajam. Lord Brahma, he says that I worship Govinda. Lord Brahma does not worship Vishvarupa. No devotee worships Vishvarupa of the Lord. Whom do we worship? We worship Lord Jagannath, Krishna, beautiful form of Krishna in the temples. Right? So all the material ingredients combined together, along with all the energies of Krishna, that is called Vishvarupa. It's an imaginary form. There is nothing called as Vishvarupa. It's a impersonal manifestation of this material energy. That is, people imagine it to be Vishvarupa. Of course, it is moving because of Lord's energy, because Lord has entered into it. So that is why sometimes it is called as Vishvarupa. But actually, that is all the energies combined together with the Lord's entrance into it.
So people call it Vishwarupa. So it's not Vishwarupa, or this universal form of Krishna is not the original form of Krishna. That is, devotees are not attracted by that. We are not attracted by Vishwarupa of the Lord. No. We are attracted by the beautiful form of Krishna, where he plays his flute, his eyes are like lotus petals. His body, the color of his body is like blue sky. And he wears peacock feather on his forehead. That form devotees are attracted to. And that's why and that perfection of devotion you see in Shri Vrindavan Dham. Krishna's original beauty and how devotees are attracted to Krishna's beauty, you find in the original Dham of the Lord, which is Shri Vrindavan Dham. When Krishna descended in this material world 5,000 years back, all his leelas, the most beautiful pastimes of Krishna, were manifested in Shri Vrindavan. This Vrindavan is a tract of land which manifests itself when Krishna has to descend into this material creation. When Krishna enters into this material world, when he descends, he takes avatar. When he incarnates, at that time, his energy, his internal potency manifests itself in the form of Shri Vrindavan Dham. So Shri Vrindavan Dham is non-different from Krishna. There is no difference. And all the devotees, those who go to Vrindavan, they experience that devotion, that beauty of Krishna's pastimes in Shri Vrindavan Dham. And Shri Vrindavan Dham becomes even more beautiful during Kartik. The month of Kartik is very, very special, because during the month of Kartik, Shri Vrindavan Dham of Lord Krishna becomes even more beautiful. And that is why devotees from all over the world, they come to Vrindavan during Kartik month. So the divine manifestation of Krishna's abode in Golok Vrindavan, in the spiritual world, that same Golok Vrindavan, its replica you find here on this earthly planet, in this tract of land called Mathura Vrindavan. Same abode of Krishna has manifested here. Just like when in every country there is embassy of, every country has its embassy. For example, the US or India or China or Pakistan, whichever country, every country has its embassy in other countries. So whenever the president of the country or the king of the country, he visits that country, he has a place where he lives. So that embassy is the property of, suppose India has its embassy in the US, that is property of India. It's not considered to be property of the US. Similarly, this Dham, the Golok Vrindavan, where Krishna lives in Vaikuntha, that abode descends itself in the form of Sri Vrindavan Dham, which we see on earth, Mathura Vrindavan, and that tract of land is property of Krishna on earth. Of course, the whole world is Krishna's property, but especially that tract of land is the internal potency of Krishna. It's a replica of, it's basically, you can say, embassy of Lord Krishna on earth. So whenever he descends, this Vrindavan Dham becomes active. So that's why every year we conduct a spiritual trip to Sri Vrindavan Dham during Kartik.
and we immerse ourselves in the spiritual realm of Lord Krishna in Sri Vrindavan Dham. And when all the devotees, they combine together, they perform the devotional service to Krishna in Sri Vrindavan Dham, it becomes even more enlivened. So this year also we are conducting a spiritual trip to Sri Vrindavan Dham during Kartik. All of you might have received the message also. You will receive messages in next few days again. And all of you, those who are interested, you can all come to Sri Vrindavan Dham and take part in the pastimes of Lord Krishna during the month of Kartik, along with the devotees. Visiting Vrindavan it becomes even more joyful when we visit with devotees, because then you experience the real Dham of Vrindavan, because all the devotees, they engage together, because man is a social animal. So when we engage together in Krishna's pastimes, that becomes even more blissful. So all of you, those who are interested, you can register yourself for the yatra we conduct every year during Kartik. This year also we are conducting. You can also participate in the Kartik Vrindavan Yatra 2023. So anyway, so Krishna's beauty, devotees are not interested in Vishwarupa. They are not interested in seeing the universal form of Krishna. What you will see in universal form? It's a material manifestation. So impersonalists and non-devotees and atheists, they are interested in all that. But devotees are interested in the beautiful form of Krishna, which is the lotus, where Krishna is, his eyes are like lotus petals. He plays his flute beautifully with his lotus lips, and his body is, the color is like blue sky. So that form of Krishna, all the devotees, they worship and they get attracted to. And once you are attracted to that beautiful form of Krishna, you'll never be attracted to anything else in the whole creation. Now text 5, shloka number 5. Parena vishata swasmin matraya vishwasrigganaha chukshobhanyonyam asadya yasmil lokascharacharaah. Parena vishata swasmin matraya vishwasrigganaha chukshobhanyonyam asadya yasmil lokascharacharaah. Translation: as the Lord in his plenary portion entered into the elements of the universal creation, they transform into the gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest. Now you see, what is Maitreya Rishi saying here? So he says, Parena Vishata Su Swa Asmin. Swa Asmin means he himself. Swa Asmin is very important word in this shloka. Swa Asmin means Krishna or Lord Vishnu, he himself enters. In the previous session also we discussed that Lord enters with his material energy, destructive potency, goddess Kali or Mother Parvati. So that is transformation of Lord Krishna which enters. But here you see in this shloka, Parena Vishata. Vishata means to enter. From Vishata, the word Vishnu comes. So Parena Vishata Swa Asmin. Lord Vishnu himself, he enters. So this is not transformation of Lord Vishnu. This is the original Lord Vishnu. He enters. Right? Matraya Vishwasrigganaha. Matraya means the plenary portion of Lord Vishnu. Vishwasrig Ganaha. So he enters into this material energy which has all the ingredients of this material creation. So Lord Vishnu, he himself enters.
It's not that uh, his transformation, Lord Shiva, or his uh, energies in the form of living entities. No, directly the Lord Vishnu enters by his plenary portion. Now, what is the meaning of plenary portion of Lord Vishnu? Plenary expansion. So the comparison is given in the Brahma Samhita by Lord Brahma. So what does he say? दीपाचिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे वहि च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. So the example is given just like a candle is lit by another candle. So when you ignite a candle from the original candle, all the candles will have same potency. All candles exactly look like the same, but still the original candle is original candle, which is Krishna. So plenary portion means Krishna expands himself, but the potency does not decrease, same potency. So that is plenary expansion. That is the meaning of Vistar. So Krishna expands himself as plenary expansion. You see, in this material creation, Vishvasrik Ganaha. Vishvasrik Gana means in this material creation, in this Vishwa means universe. So till now we discussed that first the ingredients were created, this material creation got created along with living entities, time element, the three modes, all these things are combined together. So this whole material energy is created. And then things were suspended. So the Lord entered into it. And then things started moving. And now you see the universe. Now universe, we are talking about the universe now. So the universes were created and the Lord entered into each universe. Lord Mahavishnu, he entered into each universe as Garbhodakshai Vishnu. You see, Chukshobha, Anyonyam, Asadya, Yasmil, Lokash, Chara, Charaha. And then this material energy transformed itself. When the Lord entered into this material energy, he himself entered through his plenary portion into this material universe. So this material universe transformed itself into Lokash. Loka means the planetary systems. So all the planetary systems got created. And Chara, Achara. Chara means moving and Achar means non-moving. So all moving and non-moving elements got created. You see. So matter cannot increase its volume on its own. Matter cannot increase its volume on its own. Right? In our human body also, till the soul is there within the body increases in size as much as required. Body keeps changing. The moment soul leaves the body stops increasing, isn't it? Matter increases its volume only because of spirit. So matter cannot increase or decrease unless it is touched spiritually. So matter is a product of spirit. Matter cannot generate on its own. Matter is a product of spirit. And that is why it increases or decreases only by spiritual touch. It cannot increase or decrease by itself. So this material world also has not developed its form without any
spiritual touch. No. These atheistic people and these modern scientists, they say that this material world has formed on its own. But at a micro level, we see that even a microbe cannot move without spirit. So how can this universe move without spirit? Or how can this universe grow without spiritual touch? Because as long as spirit is there within matter, matter increases. But without spirit, matter stops increasing. So this material world or this universe expanded. Why? Because Lord Vishnu entered, the supreme spirit, Param Atma. Because the Lord Vishnu, he entered into this creation. This whole material universe expanded itself. You see, into Lokas Charachara, into moving elements, non-moving elements, and Loka, the planetary systems. So that's how this universe got created. When Lord Mahavishnu, he entered into this universe as Garbhodakshayi Vishnu, then by the entrance of Garbhodakshayi Vishnu, this material energy or this universe assumed its form. The universe expanded its form because of the entrance of Lord Mahavishnu as his plenary portion, Garbhodakshayi Vishnu. So how by the entrance of Garbhodakshayi Vishnu this universe came into action? Now we will see in the upcoming next few shlokas. So today's session will stop here. All of you can like the video, comment, share with your friends. If you are watching on YouTube, like, subscribe, comment, and as much as possible, you can share. Thank you very much. Hare Krishna.
राम हरे 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 कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में इस अध्याय में जो छठा अध्याय है तीसरे स्कंद का, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो सृष्टि है उसकी रचना हुई। और हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि सृष्टि में जब रचना हुई तो उसके बाद सारी गतिविधियां रुकी हुई थी, और उसके बाद जब भगवान ने इसके अंदर प्रवेश किया तो सारी गतिविधियां वापस से प्रारंभ हुई। और हमने देखा इससे पहले वाला जो श्लोक है उसमें कि जब भगवान का प्रवेश हुआ तो सारे जीव और ये प्रकृति में गति आ गई। अब आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे चौथे श्लोक से। चौथा श्लोक। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत्स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत्स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्। ट्रांसलेशन अनुवाद। When the 23 principal elements were set in action by the will of the Supreme, the gigantic universal form of the Vishwarupa body of the Lord came into existence. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। जब 23 प्रकृति के पदार्थ को गति दिया भगवान ने, तब भगवान का जो विश्व रूप है वो अस्तित्व में आया। अब आप देख मैत्रेय ऋषि क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रबुद्ध कर्मा। कर्मा का मतलब कर्म क्रियान्वित होना, कर्म में आना, गति में आना। अब प्रबुद्ध का मतलब होता है उसमें जागृत होना। तो प्रबुद्ध कर्मा दैवेन, दैव मतलब भगवान। तो भगवान के स्पर्श से, भगवान के प्रवेश करने से त्रयोविंशति को गणः, तो ये जो विंशति मतलब 20, त्रयो मतलब 3, तो 23, 23। तो 23 जो गण यानी 23 जो हमने चर्चा किया था पिछले सत्र में कि जो 23 पदार्थ हैं, जो 23 गण है, पदार्थ हैं इस जगत के, प्रेरितो अजनयत स्वाभिर, इन सब को गति मिली, इन सब में गति आई जब अजनयत स्वाभिर, स्वाभिर स्व मतलब जब स्वयं भगवान ने इसमें प्रवेश किया, इस सृष्टि में। स्वाभिर मतलब स्वयं उन्होंने जब प्रवेश किया। मात्रा भी अपने
विस्तार से, अपने विस्तार के माध्यम से, उनका जो विस्तार था उसके माध्यम से जो वो प्रवेश हुए, तब अधिपुरुषम, अधि मतलब ये जो जड़ पुरुष का रूप, या आप कह सकते हैं विराट रूप या विश्व रूप जो है, वो अस्तित्व में आया। अब ये जो विश्व रूप है भगवान के, या विराट रूप कह लीजिए या विश्व रूप कह लीजिए, ये मुख्यतः अभक्त लोग जो होते हैं, या जो नास्तिक लोग होते हैं, या जो निराकारवादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, उनको इसे सुनने में बड़ा मजा आता है। वो लोग ये विराट रूप विश्व रूप से बहुत आकर्षित होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो विराट रूप और विश्व रूप में उनको आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उनका आकर्षण भगवान के वास्तविक रूप से होता है। ये जो विश्व रूप या विराट रूप है, ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब भगवान ने प्रवेश किया तो ये जो ब्रह्मांड का रूप बना उसे विराट रूप कहते हैं। ये काल्पनिक रूप है, ये वास्तविक रूप ऐसा कोई रूप नहीं है। वास्तविक रूप तो भगवान का विश्व, इस जड़ जगत में विष्णु है और आध्यात्मिक जगत में कृष्णा है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो विराट रूप और विश्व रूप से ज्यादा उनको आकर्षण नहीं होता। वो सोचते हैं क्या देखना है मुझे विश्व रूप में, वो तो जड़ जगत है, उसी उसी का जो रूप है उसे विश्व रूप कहते हैं लोग। तो उसमें जो आकर्षण है वो, क्योंकि जो नास्तिक लोग होते हैं, जो अभक्त लोग होते हैं, वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनके लिए हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों ने विश्व रूप की रचना की है, कल्पना की है। क्योंकि उनको बड़ी बड़ी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों से वो भ्रमित होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। पहाड़ को देख के, समुद्र को देख के, बड़ा विशाल कुछ, तो इसलिए उनको ये दिया गया है कि चलो भाई इसी बहाने कम से कम भगवान की जो शक्ति है उसको मानेंगे वो। लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्त हैं, जैसे जब भगवान 11वें अध्याय में भगवत गीता के जब अपना विश्व रूप, विराट रूप जब अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन पहले तो भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि भगवान मुझे आप दिखाइए। कृष्णा से निवेदन करता है कि मुझे आप अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखाइए। लेकिन जब भगवान उसे अपना विराट रूप कृष्णा दिखा देते हैं, तो फिर अर्जुन को मजा नहीं आता उसे। वो बोलता है नहीं नहीं कृष्णा, आप आपने वापस उसी रूप में आ जाइए। अर्जुन भयभीत हो जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता है विश्व रूप और विराट रूप देख के, क्योंकि उसमें कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो कृष्णा के वास्तविक स्वरूप में है, जो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि वेणुम प्रणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कहते हैं कि वेणु प्रणंतम, वेणु, वेणु का मतलब वंशी, कृष्णा की जो मुरली है, बांसुरी है, वो कृष्णा अपने कर कमल, दोनों कर कमलों के में मुरली पकड़ते हैं और अपने
कमल मुख से उसे बजाते हैं। वेणुं पुणंतम अरविंद दलायताक्ष। और अरविंद दलायताक्ष, और उनके जो नेत्र हैं अक्षम, अरविंद दल, कमल की जो पंखुड़ी होती, कमल की जो, कमल के फूल, कमल का जो फूल होता है, उस बिल्कुल उसके, जो कमल सबसे सुंदर फूल माना गया है, उसकी जो, उसका जो, उसकी जो बनावट होती, कमल का फूल बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर माना गया है। तो कमल का जो फूल है, उसका जो, आपने देखा होगा कमल को, कमल दल जो उसके पंखुड़ियां हैं कितने सुंदर होते हैं। भगवान के जो नेत्र हैं बिल्कुल वैसे हैं, जैसे कमल का जो शेप होता है ना, कमल के पंखुड़ियों का, कमल के फूल के, भगवान के नेत्र बिल्कुल वैसे दिखते हैं, जो आकार कमल के पंखुड़ियों का होता है। तो अरविंद दलायताक्षम बरहावतम सम असित अम्बुद सुंदरांगम। बरहा, बरहा का मतलब जो मोर के जो पंख होते, मोर के पंख को भगवान अ, अपने माथे पर पहनते हैं। मोर के पंख से उनका जो माथा है वो सुसज्जित होता है। उनके जो सर है उसमें वो मोर का पंख पहनते हैं। बरहावतम सम असित अम्बुद सुंदरांग। और उनका जो शरीर का जो रंग है वो अम्बुद, आकाश, नीला आकाश जैसा होता है, वैसे उनके शरीर का रंग है। सुंदरांगम, ऐसे सुंदर दिखते हैं कृष्ण। बरहावता समसिताम्बुद सुंदर, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ। कंदर्प कोटि, इस जगत में सभी लोग आकर्षित हैं कंदर्प से। कंदर्प का मतलब क्या? कामदेव। तो ये जो पुरुष और स्त्री का संबंध है, ये जो काम देवता है वो इसको नियंत्रित करते हैं, और इसे सबसे महान लोग सुख मानते हैं। इस जड़ जगत में लोग इसे सबसे बड़ा सुख मानते हैं। सभी लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं। पुरुष और स्त्री का जो संबंध है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, सभी का यही आकर्षण रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कंदर्प कोटि। तो ये जो आकर्षण है ये किसके कारण है? कंदर्प यानी कामदेव के कारण। कामदेव, काम देवता इसको नियंत्रित करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कंदर्प कोटि, करोड़ों अरबों खरबों जो कंदर्प है यानी कामदेव है, कमनीय विशेष शोभ। कृष्णा करोड़ों अरबों खरबों कामदेव की जो सुंदरता है उससे भी अधिक सुंदर है, उससे भी बहुत अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनकी जो सुंदरता है वो ये करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर है।
तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमह भजामि। ये जो कंदर्प है, जो कामदेव है, सभी को आकर्षित करते हैं, लेकिन कृष्णा की जो सुंदरता है, वो करोड़ों अरबों कामदेव भी आ जाए तो उनके सामने, कृष्णा की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो भक्त हैं वो कृष्णा की सुंदरता से आकर्षित हैं। वास्तविक सुंदरता जो कृष्णा का जो स्वरूप है, उसको, उससे, उसकी पूजा करते हैं। मंदिर में कृष्णा का जो सुंदर स्वरूप है, हम उसको पूजा करते हैं। जगन्नाथ, कृष्णा, राधा रानी, हम कृष्णा के उस सुंदर स्वरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि वो कृष्णा का वास्तविक रूप है। विराट रूप में क्या है? वो तो जड़ जगत में जो भगवान की जो शक्तियां हैं, उसी का नाम दिया गया है विराट रूप। तो इससे जो अभक्त हैं और जो मायावादी लोग हैं, वो इससे बहुत आकर्षित होते हैं। भक्त लोगों को इसमें कोई आकर्षण नहीं होता, विश्व रूप और विराट रूपों में। हाँ, वो सुनते हैं इसके बारे में, अच्छा लगता है उनको कि भगवान कितने महान हैं, लेकिन आकर्षण उनको कोई नहीं होता इसलिए। वो आकर्षण भी उनको इसलिए होता है क्योंकि कृष्णा से संबंधित है वो विराट रूप। और जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, तो कृष्णा का जो सुंदर स्वरूप है, वो जब इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं करते हैं, तो उनकी शक्ति का विस्तार होता है श्री वृंदावन धाम के रूप में। जैसा हम सब जानते हैं कि कृष्णा का जो धाम है, वैकुंठ धाम, उसमें जो ग्रह है कृष्णा का, जो जो लोक है कृष्णा का, वो है गोलोक वृंदावन धाम, जहां पे कृष्णा रहते हैं। तो जब कृष्णा इस जगत में अवतार लेते हैं, तो वही धाम गोलोक जो है वो पृथ्वी पर अवतरित होता है श्री वृंदावन, मथुरा वृंदावन धाम जो है उसके रूप में। जैसे सभी देशों में भारत की एम्बेसी होती है, जिसे हम दूतावास कहते हैं। सभी देशों में, आप चाहे अमेरिका जाइए, चाइना जाइए, इंग्लैंड जाइए, सभी जगह भारत का दूतावास मिलेगा आपको, जिसे हम एम्बेसी कहते हैं। अब ये जो एम्बेसीज हैं, ये उस देश की संपत्ति नहीं मानी जाती, वो भारत की संपत्ति होती है। जैसे आप इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां पर जो काउंसलेट है इंडिया का, या एम्बेसी है भारत का, वो भारत की संपत्ति है, वो ब्रिटेन या इंग्लैंड की संपत्ति नहीं है। तो इस तरह से सभी देशों में भारत की का दूतावास होता है, और सभी देशों का भारत में भी दूतावास है। तो इसे एम्बेसी कहते हैं इंग्लिश में। तो जब भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं, तो उनके लिए ये जगह, ये उनकी जगह है, ये उनका स्थान है जहां पे वो रहते हैं। या जो देश का राजा है वो जाता है उस देश, दूसरे देश में, तो वहां रहता है, वो उसका स्थान है। उसी प्रकार ये जो मथुरा वृंदावन धाम है, ये कृष्णा का एम्बेसी है इस पृथ्वी पर। ये कृष्णा की प्रॉपर्टी है। वैसे तो पूरा जगत, विश्व ही कृष्णा की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये उनकी अंतरंग शक्ति का रूप है। उनकी उनकी जो दिव्य शक्ति है, उसका स्वरूप है श्री वृंदावन धाम। जब कृष्णा आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए, वृंदावन धाम जो है वो यहाँ पर अवतरित हो जाता है, और वहां पर कृष्णा अपनी सुंदर लीलाएं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। और जो भक्त लोग हैं पूरे विश्व से, वो इस जगह पर आकर कृष्णा की उस दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं। और इसका वास्तविक अनुभव होता है कार्तिक के महीने में। जब कार्तिक के महीने में वृंदावन, पूरे विश्व से भक्त लोग आते हैं, क्योंकि कार्तिक में वृंदावन का स्वरूप बहुत ही सुंदर हो जाता है। क्योंकि जितने भी भक्त हैं पूरे विश्व से, वो सभी कार्तिक के महीने में वृंदावन आते हैं, और सभी जाते हैं तो हम भी जाते हैं।
तो कार्तिक के महीने में हर साल हम यात्रा करते हैं श्री वृंदावन धाम का। तो इस बार भी कर रहे हैं और आप सबको मैसेज आया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगले एक दिन 2 दिन में फिर से मैसेज आ जाएगा आप लोगों को श्री वृंदावन धाम यात्रा का। तो हर साल हम करते हैं और वहां पर कृष्णा की दिव्य लीलाओं का हम अनुभव करते हैं। भक्तों के साथ जाने का एक अलग महत्व होता है। ऐसे तो आके अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन अकेले जाके वो दिव्य अनुभव नहीं होता जो हम संग में, साधु संग में, शुद्ध भक्तों के संग में जो अनुभव होता है। तो हमारी इच्छा रहती है कि सभी जो हमारे शिष्य लोग हैं वो सभी इसमें भाग ले, और इस साल भी हम वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी, जिन लोगों को इच्छा है, वो लोग, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था जो मैसेज है, तो आप सब भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि कृष्णा जब प्रवेश करते हैं तो ये जो जड़ प्रकृति है ये चलने लगती है, और जब चलने लगती है तो उसी को विराट रूप की कल्पना उसी को की गई है। अब 5वां श्लोक। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिल्लोकाश्चराचराः। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिल्लोकाश्चराचराः। Translation, अनुवाद। As the Lord in his plenary portion entered into the elements of the universal creation, they transformed into the gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो जब भगवान अपने विस्तार के साथ जब इस जड़ जगत में प्रवेश किया उन्होंने, तो ये जो जड़ जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, इसने अपने आप का विस्तार कर लिया, और जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, और साथ ही साथ सारे जो ग्रह और समूह हैं, लोक, वो सारे विस्तृत हो गए। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो कह रहे हैं परेण विशता स्व अस्मिन। विशता, विशता का मतलब प्रवेश करना, और इस विशता शब्द से ही विष्णु शब्द आया है। तो भगवान विष्णु जब प्रवेश करते हैं, जब वो इस जगत में, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक का। स्वस्मिन, स्व अस्मिन, स्वयं, स्व मतलब स्वयं, मात्रया, मात्रया का मतलब जब भगवान विष्णु स्वयं की मात्रा यानी स्वयं का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। मात्रया, मात्रा मतलब उनका विस्तार, तो स्वयं का विस्तार करते हैं भगवान विष्णु। एक तो हमने देखा पिछले सत्रों में कि जब भगवान विष्णु शिव का रूप लेते हैं और काली माता के साथ यानी पार्वती माता के साथ प्रवेश करते हैं, वो विकार है। और यहाँ पर देखिए कह रहे हैं स्व अस्मिन, यानी स्वयं भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं परमात्मा या फिर पूरे ब्रह्मांड के जो भगवान है उसके रूप में। तो ये कोई विस्तार या ये कोई विकार या कोई जीव तत्व नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु अपना विस्तार करते हैं। तो विस्तार का मतलब क्या होता है, विस्तार किसको कहते हैं? तो ब्रह्मा जी बताते हैं उदाहरण देके कि विस्तार का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम।
तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीप से आप कई हजारों लाखों दीप जला सकते हैं, और समान धर्म, जितने भी दीप आपने जलाए हैं सबकी जो शक्ति है वो बराबर होती, लेकिन फिर भी जो पहला दीप है वो पहला ही दीप होता है। लेकिन जितने भी दीप हैं सबकी शक्ति बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर विस्तार का मतलब यही होता है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं लेकिन उनकी शक्ति कम नहीं होती। जितने भी विस्तार है उन सबकी शक्ति बराबर है, जिन्हें हम विष्णु तत्व कहते हैं। नारायण हो गए, विष्णु हो गए, ये सभी, और जो अवतार हैं भगवान के, ये सब विस्तार है उनके। तो उसमें शक्ति कम नहीं होती, वही बराबर की शक्ति होती। जब विकार आता है तब शक्ति कम हो जाती है, और जब जीव तत्व है उनमें तो शक्ति बिल्कुल ही बूंद की तरह होती है, भगवान की शक्ति सागर की तरह है। लेकिन जब विस्तार लेते हैं भगवान तब उनकी शक्ति बराबर रहती, उसी को विस्तार कहते हैं। उसी को मात्रया यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं। तो स्वस्मिन मात्रया विश्व सृग गणः, तो विश्व सृग, तो ये जो जितने भी ब्रह्मांड के गण, यानी जो हमने देखा जितने भी पदार्थ और जितने भी हैं, चुक्षोभ अन्योन्यम, ये सब में गति आ गई और इन सब में परिवर्तन आने लगा, एक के बाद एक। अन्योन्य मतलब एक के बाद एक सब में परिवर्तन आने लगा जब भगवान प्रवेश किए इसमें। यस्मिन लोकाश चराचरा, और 14 लोक, यानी लोकाश मतलब कहते हैं ना ब्रह्मांड त्रिलोक है, तो ये ब्रह्मांड में जब भगवान अपने, महाविष्णु ने अपने विस्तार के द्वारा प्रवेश किया गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, तब इसमें सारे लोक और चर अचर, चर मतलब चलने वाले और अचर मतलब जड़ जो चल नहीं सकते, इस तरह के सारे जो जो सृष्टि है वो सारी विस्तृत हो गई, प्रकट हो गई, सृजन हो गया इसका। तो जड़ जो है वो स्वयं अपने अपना अपना जो आकार है वो नहीं बढ़ा सकता, कोई भी जड़ वस्तु। शरीर भी तभी तक बढ़ रहा है जब तक इसमें जीवात्मा है। जीवात्मा जिस दिन निकल जाती है शरीर नहीं बढ़ सकता। तो जब तक जड़ वस्तु में चेतन यानी आत्मा का स्पर्श नहीं होगा तब तक उसमें न तो विस्तार हो सकता है, न विकार हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जड़ वस्तु न तो बढ़ सकती है न घट सकती है। तो कुछ आजकल के लोग हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि इस जगत में गति अपने आप आ गई, आ ही नहीं सकती। जब छोटे आयाम पे एक छोटी सी चींटी भी, एक छोटा सा दीमक जो होता है वो भी जब बिना आत्मा के नहीं चल सकता, तो ये ब्रह्मांड बिना परमात्मा के कैसे चल सकता है, उसमें गति कैसे आ सकती है। तो जब तक जीवात्मा है जड़ जड़ के संपर्क में, तब तक जड़ वस्तु में विकार विस्तार सब कुछ होता है, वो घटता है बढ़ता है सब कुछ होता है। उसी प्रकार और हम ये देखते हैं कि जब तक जीवात्मा शरीर में होती है तब तक शरीर बढ़ता है घटता है, जो भी होना होता है होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई उसके बाद शरीर ना तो घटता है ना बढ़ता है, सारी गतिविधियां बंद हो जाती। गतिविधियां इस सृष्टि में सिर्फ आत्मा के कारण है, और इस जगत में गतिविधियां परमात्मा यानी भगवान के कारण है। और जब भगवान इसमें प्रवेश करते हैं तब ये चलने लगती है, और उन्हीं को हम विष्णु कहते हैं या परमात्मा। तो आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि सब तक ये संदेश जो है वो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।